Okay, guys. Good morning, everyone. See, I took a little time because I did not want to have my positions on and then actually speak. It becomes very difficult because I will have to in between go and square up my positions and all. So I had positions. I had told you we will take a long positions. We have taken the long positions in the um, on the Friday in the around 3 o'clock we talked about it. Okay, currently let us actually look at what is happening. See, currently I don't see any big buying or big selling happening. So even if some selling comes, it is going to be profit booking. I don't see what happens is let me first talk to you about the setup right now. See, this is a important setup. Let me go to the all of you can hear me, right? Some of them are saying no audio. If you can hear me, just type in audible or clear or something so that I know. Audio is clear? Okay. 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 Let's start then. Okay, look at this, guys. This is an important level. Okay. This is an important level which was broken earlier with the gap up. Okay. And what actually market did is it actually broke this down, all the gaps were filled, and from there it has actually moved on the upside. Okay. Now this one should be looked as a retesting of this particular breakout. So as long as we are above 16,000, market is going to be super strong. Okay. It is going to be super strong. So you don't have to worry about the market. Whatever actually there will be dips. See, there will be some profit booking which is going to definitely come. Okay, just a minute. Some of you are having some challenges with the sound. Let me. Now is it better? Now is it better? Some of you are saying it is still not okay. It's better, right? Okay. Okay, guys. So let's look at this. So I'm telling you about a positional view. Positionally, unless market is not going to breach 16,000 on a closing basis. Actually, if you look at the broader thing, the major support will come at 15,800 levels, 15,700, 800. That is the important level. But anyway, even at this level, it has to actually not close below this, because that is where there is some big buying which has come. Okay, because these big buyers have to go and give the support if at all we come down. Okay, that is something very important. Now what has happened here is this is a huge gap. See, this was a gap down. Similar to that, we have a very big gap up. Okay, this gap is big. Generally a gap, right now we are still not completely on the bull market side where actually we can hold such huge gaps. So at least there should be some attempt to come and try to come to somewhere around 16,130. That should be at least some levels which it has to come and test. I don't expect any extraordinary dip. See, 16,080, 16,130, 16,170. Note down these levels. These are all important levels. Let me write down 16,080. Okay. 16,130, 16,180. Now these are very important levels. Market actually, if at all it comes down, I don't see it will go below this 1680. Okay, so that is the max it may go, and will it go or not is also not very sure. Okay, as long as it is going to hold the 16,130 also, it is actually good. So for trading in Nifty, it is going to be difficult because the
amount of gap is very high. So the risk is going to be on an extremely high side. Okay, so let's look at Bank Nifty. So for Bank Nifty, see what has happened here in Bank Nifty. This gap, there were two gaps, this gap and this gap. One of the gap got filled, this gap did not fill. So it has not filled, it's okay. Now the most important thing, it needs to start trading above this. So 35,000 is very important. We need to go and sustain above 35,000. Till then it is going to be sideways. Until actually Bank Nifty doesn't support, Nifty actually, see currently with the Nifty, whatever it could do, it has already done. So that is the reason which I was telling you, whoever is actually already having positions, you can actually look at exiting once. Are we? Sorry guys, we got disconnected, some issue. Let me do one thing. Let me actually log in from other device also. Let me log in from other device also. Just a minute. Okay. One second. I'm trying to log in from other device so that if this gets disconnected, I'm actually connected with other device. And I'll actually switch on other net also so that we don't have any issue. Okay, I'll be on another device. With the different internet connections to avoid any kind of mishap. Okay. Okay. Okay, great. So let's actually come back and understand what actually we were talking about. So the setup is much better in case of, again, no sound. Some of you are again saying no sound. What is the problem? Is the sound is there? That was earlier, right? Okay, sound is fine, right? Okay, that was probably during the disconnection. Okay, now it's clear. So coming back to this, so look at this in case of Bank Nifty. Okay, in case of Bank Nifty, the most important thing is this. It needs to hold above 34,800. If it cannot hold this, then probably it will come back and retest this level. So Bank Nifty is even now not very strong at this point of time. Okay. And Bank Nifty can actually go and test the previous, see that has not filled the gap. Okay. So the gap is not filled. So if you look at the order flow at this point of time, there is some buying which has come, but this is all retail guys. No big actually buying, no big selling. Some selling buying came here, but does not have actually any big weightage here. It has not been able to cross this 1 lakh figure. So we are not seeing much of the thing. That is the reason I told you whoever has actually got the positions, whenever you get some, see, it will not come down also easily. So what happens is you can actually exit whenever it goes up, you can exit. Where is it falling heavily, guys? How is it falling heavily? On what basis you are saying? We have opened such a big gap. It has come down a little bit. It's okay. Nothing big which has happened here. I don't see any big selling which has happened here. So this is just a profit booking, whatever I can see here. So this is going to continue and the market may try to go up, but it will fail. It's not going to actually be easy for it to go up until unless some big buying comes. Big buyers are not actually ready to buy at these current levels. Okay. At such huge gap up, they have already bought at the lower levels, so they are not ready. Okay. So currently what I see here is no big buying, no big selling. Nothing is happening in Bank Nifty.
Okay, there's nothing happening in bank nifty. In case of nifty also, there was some buying which has come, but it's not getting much of a support. See, but at the same time, we cannot go on to short sides. If you go on the short side, you will actually again get stopped out very badly. Okay, so for that reason, we need to just wait at this point of time. Probably we can look at some stock specific opportunities, because at this point of time, index trading will not make sense. See, index currently is buy on dips, no doubt on that. But that dip, when it is going to come, maybe 11:30, 12:30. If it doesn't happen during this period, then it is going to be maybe after 2 o'clock, or maybe end of the day. Any of these times is where we can look at this. So what happens is, options they will still sell. See, what will happen is, this 16,200 is an important level. So 16,200 options they are going to sell. So they will actually put that pressure on the market. But look at this, advanced declines are very much on the positive side. So I don't see any reason why the market is going to come down. Or Infi is actually on the upside. All the IT stocks are up. Market will not come down, guys. See, either banking has to give support or IT has to give support. Today, IT is giving support. Market will not fall very easily. Even if it comes down, not big, hardly 50 points, max 100 points. Okay. I don't see much of, and if you look at this, only HDFC Bank is something which, okay, HDFC Twins have some weightage and they are actually not allowing the market to go up, and these people are not allowing the market to come down. So I think index is going to be in a very tight range. Okay, so there's no point in actually trading in index for today specifically, until unless we get some good dip. If we get a good dip, then we can actually look at taking the trade. Okay, and if we are able to sustain this, and then we start moving beyond this, see, we close above 16,250, then market is going to become super duper bullish. Okay, now bank nifty needs to give support. Bank nifty has to close above 35,000 for that. Okay, so by any chance bank nifty comes here, okay, comes here, we can probably look at buying. Okay, right now, no looking at selling. Selling is going to be very, very difficult. Okay, let's look at what it is. See, currently market is anyway on the upside only. Currently, at this point of time, it may try going up, but it is having resistance. Until unless it is going to cross 35,000 with some good buying, currently no big buying is there. No big buying is there. Okay, so let's see if there is any where we have some good stocks which can actually be traded. Let me this just a minute. Already these have moved. Okay, let's look at probably Hindalco. Let's see if there is any move which is coming in. Let me see. Currently, index better to be avoided, guys. No buying, no selling, because selling is not going to be ideal at this stage, and selling probably only when it starts trading. See, if it starts trading below this, then probably it will come till here. So it's maybe 100 to 100 points movement is what actually we can see, not bigger than that. Okay, and for bank nifty, for nifty, if it starts trading below this, it may come till here, somewhere here. So possibility, or it will come and take support here. So one of these two levels, it will try to take support. I don't expect more than
more than what do you say? I don't expect more than 100 points movement in Nifty. So maybe 16,130 or 16,080, somewhere it will take support. Okay, and Bank Nifty will take support somewhere around 34,500, 600, somewhere here it will be having good support. So since Bank Nifty is the weaker one, we can look at the sell side for Bank Nifty if the day low is going to break and we get some good selling. Okay, till then nothing to be done at this point of time. Okay, so okay, one second, we were looking at Hindalco, right? One second, let me go to Hindalco. Okay, already good movement has come. Now, taking trade here does not make sense. Let's see, wait, once we will see the okay, some big buying came here. This is what level? This is around 359. Okay, if this gets violated, then we can look at buying. Okay, until that doesn't happen. Okay, we have some big buying here also. Okay, Hindalco has some good buying. So Hindalco, we can look at buying. If it starts coming below here somewhere, we can actually look at buying this somewhere here. Okay, they have been hunting all the smaller stop losses. So Hindalco can be a good buy, but it has to come down. There has to be some dip which will come. Then probably we can look at Hindalco. Hindalco could be a good buy. But since right now it is actually on a very peak stage, better to wait. So probably at 11:30 or 12:30 we'll get a good dip. Future. These are all, I'm seeing the cash, but actually this, what we are actually looking is in the, this is actually in the future. So let's actually go to the future chart itself. The future, if I have to tell you, this is a place which I'll be more interested. So 359, 360, below 360, if it is going, no, below 360, if it goes and it stays there for some time, it gets into a range. So at the lower level, we can look at buying. Okay, see somewhere here, it should get into a range. At the lower end of the range, we can actually look at buying, not at this stage. At this stage, actually, if you are trying to take, then you have to keep a stop loss somewhere here, which is around 359. So if you want to take a trade, 359 will be your stop loss. So it is around 3 rupees is your stop loss. You can try for the limit order. You can try for the limit order 359.5 something. You can put the limit order and wait. If you get, fine. If you don't get, don't trade. Okay. Don't take options at this stage. If it comes there, you can look at options. So you can look at 360 options. Okay. But it has to come down. Only when it comes down, you have to take the trade. Because see, problem is with these options and all in stocks, liquidity will be very less. Okay. So from that perspective, it makes more sense here. I told you the stop loss, no? The stop loss is going to be this 359 is your stop loss. If anybody wants to take here, 3 rupees is your stop loss. So that is the risk. You have to understand the risk here. But this is a place where we are seeing good amount of stop loss hunts have been happening.
and based on that itself they may take the markets higher. There's a lot of short covering which is actually going to happen because of that. See, so the first opportunity we have lost, best is actually to wait for the second opportunity which will come somewhere around 12:30. Okay, so because here if you are trying to take a trade, no risk will become quite high. 3 rupees risk is a little bit on a bigger side. And this is going to be a very strong support, this one. All our order flow guys, that is actually a single print, what you can see. I hope you got that. It's a single print. So here is going to be a very strong support. Uh, Rohit, stop loss hunting and long unwinding, it depends on the volume of trades which are happening. So currently I see buying only happening here. It could be more of short covering also, but buying is definitely happening here in Hindalco. Okay. Okay, look at this again, Nifty moved up. So that's why I was saying buying, see, it will go up, no doubt, but no big buying is coming. So at the higher level, again, there is resistance. So this up down movements will continue. Did we get any big buying? No, this is no big buying. Okay. So there's no big buying. Any again, some stop loss hunt will happen. They will actually be hunted, and prices will go down. So that is something which is going to happen. So look at this, even this is also trying to move up, but again, there is no big buying, no big selling. Okay. So this is only because of this retail guys, which is happening. Okay. Now some more have come. Let's see. But still, actually, this is all retail guys. Okay. So there is some dip which is going to come in the afternoon. We can be very, very clear. Infosys. Let's see Infosys. Okay, Infosys also is doing good. Let's first look at the overall chart. It is still sideways. Okay, earnings is happening here. So this could be mainly because of that. Okay, let's look at Infi. Okay, Infi, I don't see that this is okay, but this is okay, but actually this could be mainly because of our, it is still sideways, so I don't actually, we are not still having more than 2 lakh. 1 lakh should be okay, but still I don't actually prefer at this stage. Okay, here this is not a single print like that. There is a lot of overlap which is happening here. Sindalco is much better compared to Infosys. Okay, it already started moving much higher. So see, taking the trade is actually a little challenge because already when the move has happened, no? So best is actually to wait for the dip to come. If a dip to come, then actually it can be done. Saroj, taking it on positional trade at this point of time, I am not very sure because it has to go and close above this level. It has to close above this 358 level, then we can look at anything on the positional side. Till then, no positional thing. Because if it crosses here, then this is actually a cup and handle formation. Then probably we can look at this. This has to, this has to be
closed above this. This is a good resistance, good volume is there, so better not to do anything there. Radu dip may not come, I don't know, I cannot tell you, right? But movement is already, see, risk, I'm mainly talking about the risk, I'm more concerned on the risk part. If you are ready to take the risk, it is up to you. I am not going to take that risk. I'm not going to take that risk. See, it is definitely good. As I said, as long as it is not going to break this, it is going to be super strong. But you have to look at the risk. Anybody wants to take a trade, this is your stop loss. Okay, 359 is your stop loss. So understand that risk and you can take the trade whatever you want to do. But currently I would not actually look at this. Let me look at where I can find something which is going to have less risk. That is something which I will be more interested. Let's look at Hind copper. Okay, this is also doing good. Okay, this is in a tight range. Okay, Hind copper is in a tight range. This particular range, once it breaks, there could be a good movement. So, which is around 93. Okay, this is a smaller stock. So, let me not take this. Risk will become too high because the lot size will be extremely high. So, let me not take this. Okay, India Bull Housing Finance. I think all actually things which have got beaten down very badly. Okay, this probably is much less riskier. Okay, and it has been trying to form a CIP here. Okay, looks good. This looks much better from the risk reward perspective. Okay, let's look at what is happening here. And do we have some? Okay, again, this is a 94 rupees stock. No, 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 I'll not take this. Mhm. Okay, let's look at, probably I think we will take something in the IT basket because IT is actually doing good today. Okay, let's look at LTI. Okay, LTI looks better. Okay, all of them are trying to come out of a range here. Okay, let's look at what is happening with LTI. No big volume, so we cannot do this. Okay, let's see which other thing is doing good. Okay, let's look at Titan. Okay, Titan looks good. Titan looks good. Let's see here what is happening with Titan on the. Okay, this looks good. From the risk reward, this is looking much better. So let's see if we have some good buying here. Okay, no big buying, guys. No big buying. Can't take this. Not getting any good trade here. Only the trade which is looking much better is the Hindalco, but the risk is actually little on the higher side. Let's see what is happening with TCS. TCS is actually still in the sideways thing only, as far as I see. One second. Okay.
Okay, this looks good. Okay, TCS. So this particular pattern, what is getting formed is called a morning star. So this is a reversal pattern. So if this is happening, this is good. Okay, we can take a positional trade on this also. But let's see if there is any big buying. Otherwise, we can look at this only after 12:31 because we may get some dip there. Again, no big buying, guys. So no big buying which is happening here. So this is all short covering whatever is coming. So if TCS is looking very good and this pattern is very good. Okay. If we don't break this, if we don't fill this gap and we get anything here, if we come somewhere here, any dip we get, anything somewhere here, if we get, I think it is a good buy for TCS. So TCS is going to become a good buy if it is trading somewhere around 3050. Right now it is 3050, right? 3020, somewhere in that range is good. So 20 points dip if we are getting, it could be a good one because there's no big buying or big selling happening. So dip is going to come. So don't have to worry on the dip part because that could be a good place. TCS is definitely looking very good. The chart pattern is actually very powerful. If this happens, this is a trend reversal. Okay, so what is happening with our Nifty? Nifty has moved up a little bit. Okay, there is some big delta which has come here. Now, the most important thing is we need to go beyond that day high. If we don't go beyond the day high, this is just a trap. Just a minute. So whoever has got this, just a minute. We'll first look at this. The delta has been big. At what level? This is in the future. Okay, future went up a little bit. Let's go to the future only. See, this is a free trade, guys. Don't actually look at this. This is completely a free trade. Okay. So now the most important thing is the high, whatever is going to happen here is what we will consider. 213, 214. Okay. So here actually it may see until unless we start trading above some give another 5 points here, 220 above it has to trade. If it is not trading above that, then probably here people are getting stuck very badly. 1 second, what happened here? Okay, so at higher level they have got stuck very badly. Okay, so there is some big delta there, which but after that there is nothing which is happening here. Just a minute, this is to don't take calls. Don't take calls. Price may come down. I have told you earlier also. 16,200 is a very strong resistance. It is not going to be easy for the market to move up. We need big buying above this. So this is just a trap. This big delta is probably just a trap. Because see here people have got stuck. Retail guys have got stuck. Bank Nifty, no big buying has come. Okay. See, only and only if we are able to go above this high and we again start getting, we need follow-up buying here. So here people will start booking their profits. So you should not actually get here. This is going to be bad. No, look at this. Prices started falling from there. So possibility is there, it will fall from here. Okay, if you want to take a trade, you can take a trade here. But as I said, don't keep any big
targets. So if you want to take a put, you can take a 16,200 put, you can take. Okay. Stop loss will be 20 points below the day low. So if you are taking in futures, you have to keep some 20 points above the day high as your stop loss when you are trying to short. So your first target is going to be the day low. Okay. Once you actually get into this day low part, then what you can do is you can probably look at trailing your stop loss to your entry price. Okay. I don't expect any big thing. It may actually come till 16,135 something. So that is a very important level. That is a point of control also. So there it should actually take some support. Okay. So don't expect any extraordinary thing. Some 50 points move. If you are okay, you can take. If you cannot take that, then don't take. So the dip is only for intraday, and that should be actually, this is just a profit booking. Okay. This is going to be a profit booking. There people are stuck, and that is where their stop losses will get 100. Okay, look at this. All the after that only selling is only coming here. This happened at what time? This is in time. This happened here. 10:05 it has happened. After that 15 minutes, no big buy. Only sell only is there. See, possibilities it may again go and test this. Okay, so that is the reason I'm saying it may go and test this again. So you have to have stop loss little on the higher side. Radu, that is not a big buying. This is where our retail guys have gone stuck. Don't actually expect that. They actually feel that it will go up. They have actually got stuck there. It could also be a stop loss of some people who have shorted. It could be also a stop loss. So you should not actually consider that actually as any kind of a big buying. I don't consider that as a big buying. See, I need follow through buying also to come. If follow through buying will not come here, I will not believe that particular one single delta you cannot believe, especially it is at a resistance level. Okay, if it has to be there, now we need more buying should come. If it is not coming, then it will not sustain. Okay. And Bank Nifty is also struggling. See, Bank Nifty needs to give some support. Without Bank Nifty giving support, it's very difficult. So in Bank Nifty also, we can look at taking a trade, maybe 35,000 put option you can take. Day low can be your stop loss. But don't keep any big targets. Day low is your target, first target. After that, probably another 100 points. Don't keep anything big than that. Because at the lower level, we are again trying to look for buying opportunity only. We are not looking at any kind of a selling opportunity. Just a minute. Stop loss day low. In case of put, it is day low. In case of future, it is day high. See, the trade is currently on Nifty or Bank Nifty for a very small target. Okay. The small target is you can take the 16,200 put option, and the target is this, which is the day low. Okay. And the stop loss is going to be day high, or actually in case of options, it is going to be 20 points below your day low.
Okay. And in case of this, I'm not going to take any small trades. I am actually still looking at the lower levels. I am interested in buying. I am not interested in selling. Okay, this is only a small targets. See here, in Bank Nifty is looking much more weaker. So Bank Nifty can first and foremost, it is going to test the day low. Once it is going to trade below the day low, you can trail your stop loss to your entry prices. It is 35,000 put option, and probably it can come and test this 35,700, and then 700 could be the levels. So 100 points is what we are expecting, not bigger than this. Okay. Put option, not call option. I'm saying we are going to come down, not go up. Unlikely to go up because we are at a resistance level. If we have to go up, this stop loss has to be broken. If stop loss gets broken, possibility is, see, we may go and test the high. See, sustaining that, we need either support from Bank Nifty, or we need actually bigger buying to continue. See, this one single trade, I cannot actually expect this to actually hold. Okay. At the same time, buying is still happening, sentiment is up, possibility is still there that it may actually go up. Okay, that is why I am saying the risk is not actually, risk reward is not very much favorable for any trade at this point of time. For buying, it has to, we have to get a dip. Buying at this level doesn't make sense. So it has to be only on the sell side. Okay. So 20 points below the day low is something which can be done. Bank Nifty is relatively much weaker. Okay, compared to Nifty, Bank Nifty is relatively much more weaker. Nifty may still hit that stop loss, possibility is there, but Bank Nifty may actually go down. Possibility is very high because there's hardly any buying which has happened here. Okay, here some buying is there. These buyers can try giving some support. And Friday also we had this 20 points below the day low of your option, whichever strike price you are choosing. I have actually talked to you on 16,200 put option. So if you have taken whatever is the low it has made, I have not seen that. You can actually take below that 20 points, because we don't want it to just come test the stop loss and actually then again go down. That is, see, Nifty still has some buying. Okay. Bank Nifty is something which is very weak. Bank Nifty relatively is much better trade if you have to compare this. Okay. Nifty future has to start going below this 16,200 mark. Then only that will have some impact. What is happening here? Okay. Yeah, nothing much is happening here. So let's wait. They are hunting the stop losses again on the buy side only. Okay. 16,200, what did I tell you? 20 point below the day low. I did not, did I tell you day low? If it, I told you it can get triggered also. If you want to take that risk, then only take a trade. Otherwise, don't take a trade. See, 16,200 put is little much more riskier compared to 35,000 put of Bank Nifty, because Bank Nifty is relatively weaker.
Look at this, it has started falling, it may actually break this. Safer thing is to do with in futures, because futures we will not have this problem of this option trading prices game coming down and all, because see right now upside is limited, it won't go up much. We are at a resistance level, we need much bigger buying and continuous buying to happen. Now, if Bank Nifty comes down, Nifty cannot actually stay there. Nifty also has to come down. So it has to come down. So let's see what is going to happen. And what is happening to our Hindalco? I told you, right, Hindalco, though actually it is looking good, probably we may get some dip also. Possibility is there. If we get a dip, that is good. If we don't get a dip also, it may actually keep, if it keeps getting up move, it will keep moving on the higher side. So what we have talked is on TCS. TCS, if it actually we get a good dip, that is a good buying opportunity. There could be a trend reversal which is going to happen there. And if the trend reversal is going to happen, fantastic. Nothing like that. Okay. So in that case, bank IT stocks probably have started bottoming out. Okay. So the major player like TCS, if it is actually giving something like a morning star, which is a trend reversal pattern. Okay. So that is very strong. Now the banking stocks, we need to see how actually it is going to whether see banking is looking a little bit weak currently, but after that weakness is over, Bank Nifty may also actually start doing really good. Bank Nifty, as long as it is going to hold this 34,000, and later if it starts going beyond this 36,000, then actually Bank Nifty will also become super strong. Okay. I think Nifty is also coming down, so let's wait. See, we will get a dip. Dip actually till where we will get, we don't know. Okay. So first target is this, the day low. That is our target. Okay. So this has already started going below our day low. Once it start trading below the day low, you can trail your stop loss to your entry prices. So let's wait. See, at the lower level, we are super bullish on both the indices of Nifty and Bank Nifty. Bank Nifty actually see it is still able to hold the earlier gap, so which actually can be considered more bullish. But for that, it has to start trading above 35,000. So possibility is it will go down, make at the lower level, it may again start getting some kind of a buying. So let's see. So currently there is no big buying, no big selling. Nothing is happening in case of panic. So since that is there, so weakness is higher. Because see, until it is not able to cross this 35,000 and some big buying doesn't come there, Bank Nifty is relatively weaker only. One good thing is currently VIX is actually on the positive side, which is a very good thing. But we need this to be above 18. So let's see. If VIX is actually again down, then it is going to be a very difficult thing. It will actually not help you to trade in options. It will be very, very difficult because it won't actually move much.
Neither the put will move, neither the call will move. That is a big problem if VIX actually is going to be on the negative side. So options will be very difficult to trade on the buying side. Option sellers will still be benefited as long as VIX is actually on the positive side. Fine, I think everything is okay. It should not actually come and actually start trading on the negative side. That's the only thing which is required. So don't keep any big targets. It doesn't matter what target this. Don't keep any big targets. What is the day low for today? Day low for today is around 808. So we need to start trading below 800. Okay. Once we start trading below 800, we should go and test the 700. So 100 points movement is what we are expecting in case of bank nifty. See, what happens is when that momentum is not there, no, it takes a lot of time. If momentum is there, if the big buying, big selling is there, then it will actually do it much faster. So if you see here, there was some big buy which came, but it is not getting any follow-up. Nobody is supporting that price. So people are more interested to book their profits, whoever have actually taken that. So let's wait for some more time. Nothing much is happening here. Yeah, it's okay. As long as it is positive, it's okay. It should start trading above 18, then we will get some good moves. Otherwise, it's okay as long as it is actually on the positive side. There will be some movement in the options also. It should rather keep moving on the upside. That is very important. Again, it is trying to take some support. But again, there is nothing which is big here, which is happening. Let's look at what is happening in the option chain. See, option chain is suggesting quite bullish on the Nifty part. Now it is having this hurdle at 16,200. And it is showing some good support here at 16,100. Okay, as per what we can see, I don't see any big downside below 16,100. So 16,150, 130, somewhere here only is the dip which we make it. And
Let's look at Bank Nifty. What is happening? Bank Nifty was relatively weaker. Okay, still PCR is less than 1. That's what it has to cross this 35,000 level. Till then, it is going to be challenging. Short covering. See, short covering will keep happening. It will move up, down, up, down, up, down, will keep happening. It will keep happening. But there's no follow through buying which has come here. So there can be a little dip which can come in. Stop losses are getting hunted on both the sides in Bank Nifty. Or even here also in Nifty. So this is going to be quite a sideways kind of a thing only. It is going to be difficult to trade here. Very difficult. See, the dip may come, and till it doesn't come, it will be quite sideways. Since VIX is actually not moving much, so we may not see any big movements in options also. So what happens is that movement is very important at that lower level. Whenever it goes a little bit dip also, we have to go and book profits. We cannot expect some extraordinary profit. See, if you look at this, what happened is we took the trade on this Friday, and Monday morning, for the amount of move it has made, we should have made at least some nothing less than 80% to 100% actually option should have moved up. It has not done so much. So I booked my profits and moved out. I have not been carrying any positions. So though I expect actually the market to move up, but not at this level. It has to come down a little bit, then it will again move up. Okay, this Bank Nifty somehow is taking support. There's no big buying. Difficult to trade, guys. Taking any trade is a very difficult task here. There is all the possibility your stop loss will actually get hunted. If you get your cost to cost, if you get, actually just exit the trade. Don't actually hold this trade because it is not actually making any sense. It is not going anywhere, and VIX has come down. So again, it is going to be very difficult. It will see, though the options will move in your favor, your option prices will not move. This is actually going to be a very difficult place, especially in options. I don't expect any big up move or a down move to come right now. How much impact of PCR? I didn't get you. What does that has to do with this? That is different. This is different. Why are you combining two different things? Strength wise, it is definitely coming down. But the problem here is about this VIX not moving. Your options will actually not move much.
That is the big challenge. At the higher level, again, we are seeing it is not able to sustain. So it may not move up too much. And Bank Nifty is actually, look at this, the VIX, the RSI is showing on the downside only. So looking at that, it has the potential on the downside only. So nothing much to be done here. Let's look at what is happening with Hindalco and TCS. Or if there is any other opportunity, let us look at that. Okay, Hindalco moved up higher than that, and okay, there could be some dip which can come in. As per what actually we can see in RSI, there could be some dip which can come in. So we will look at that only in the second half. There's no point. After 12:30 only you can look at that. Okay, even here also at 80 RSI, it is trying to take some resistance. So let there be a dip, because buying at this level doesn't make sense. VIX is way too low. Let's see what other stocks are available for us. See if there is any. Let's look at what is happening with BL. Good. Is it at what price? 1 second. Okay, this is looking quite good. We are near to the all-time high here. Okay. BL is at all-time high. Let's see 1 second. What is the all-time high? Oh, this is around 259.5, and today we have crossed the all-time high. Okay, great. This looks good. Positionally also this may look good because it is crossing the all-time high, and okay, but it may retest this level. Let's see if we have some big buying coming here. We can look at this. So let's look at BEL. Oh no. Okay. This is an important level. What is the low? $257. Okay. Let's look at this.
57. Okay. I think it should take support here. 257, if it is, yeah, it is actually an important level where it might take support. So looking at this, one second, where is this? This is the low, which is 257. Yes, it had gone below the 257. See, this is a much better buy, guys. Risk reward wise, this is a much better buy. And what is the, this can be a positional trade also. This is going to be all our order flow, guys. This is also a single print. So this is strong. So see, if you look at this positional trade, you can take a trade here. This is 255 will become your stop loss. Okay, 255, 3 points is your stop loss, and you can actually easily expect 260, around 2-3 points actually. So risk versus reward is 1:1 here. Okay, so around 3 rupees on the downside is your risk, and this is your first target. And once we are able to cross this and hold above this, this can be held positionally. Okay, so if it comes down, and if we are getting anywhere on the downside, it will be fantastic. Okay, I don't expect it to go below this. Okay, option, one second, let me show. Let me look at the option chain for this. Here volumes are very thin, guys, in the options. Hardly any volume is there. So liquidity will become an issue in options. Liquidity will be a major issue here. Let's see, right now we are at what? If you were already 28, right? Hardly one more week left. These option prices are quite expensive, what I can see here. So if you look at this, what is it? See, we can look at somewhere around 257.5 or 255. Any of these two only we have to take, but this is quite expensive, 8 rupees and 6.5. This is little expensive, and look at this, hardly 1,000 quantity. Liquidity is going to be a very, very, very big problem here. In options, better avoid options. Options is going to be very difficult. See, future we can trade, and future or positionally also you can actually hold. Positionally, not big of a thing. So there could be some dip which will come in. Okay, look at this. It has hunted the stop loss. It went up again. So it has hunted the stop loss. But again, we are not going to buy at these levels, guys. Here we will get stuck very badly. Here there is no big buying. Okay, this is just people have gone and actually bought here, but at the lower level, again, there will be hunted. The stop losses will be hunted for them. Prices will go down again. Okay. So at the lower level only we have to look at buying. Here, since both of them are not coming down, what is happening is they're not getting good entries. Okay, Hindalco is also there only. Hindalco will be a good buy, no doubt. TCS will be a good buy, and BL can also be a good buy.
See, the risk is going to be this 255 is going to be your risk. Don't buy anything right now. Put again, they will actually hunt your stop loss. Why you will do anything? Don't do anything. We did once, it has failed, right? So currently, don't do anything. See, the problem here is on the downside risk. See, if you look at the downside, it is limited. It is not big. Okay, it's not something very big. You will get a downside dip. You may get some 50 points. That's all. And in Bank Nifty also, you may get some 100 points. For 100 points, why you want to take this trade? If at all, if it comes down, better actually we look at a buy order in the later stage. Let it calm down, let it sustain, then we will look at a buy trade, because that is actually, if you look at this, see, let me tell you positionally what is happening. For Nifty, maximum downside risk is 16,000, 16,050. That could be a max. Okay. But if it can go up, it can go up to 16,500, 16,800 in the coming days. So positionally, it is much better to be looking at the buy side than the sell side. Okay, for Bank Nifty also, see 34,000 to 34,500, that is a very strong support. Okay, and at the higher level, now it is facing some challenge at 35,500. If it can go beyond 35,500 and higher than that, then Bank Nifty is going to become super duper bullish, extraordinary bullish. Okay, so if Bank Nifty becomes super bullish, and IT index is also actually started to what do you say, bottom out, market is actually in an extreme bullish condition. If most of the major weighted stocks and the sectors are going to become stronger, then there's no why should I actually look at shorting. See, there is a dip which can be expected, but that doesn't mean that that is a place for you to look at short. Shorts are actually very difficult. Look at this, short stop loss actually got hunted. So no point in doing that. See, buying is definitely coming, no doubt, but this is not sufficient according to me. Because this, no matter what actually they do, they will actually push again the price on the downside. See, I had buy positions, I've exited my positions because I don't expect market to go up too much from here. Once a dip comes, then probably we may again see something happening. So currently nothing to be done. Okay. So BL, it has to take this support, guys. So let's not take any trade right now. If at all, if it comes here, take support and then starts going up. Now that is a place where we will look at taking a trade. BL could be a good thing. Let it go up. Why can't let it go up? It is going to trap more people, then actually selling will come. Don't buy anything, don't sell anything, don't do anything. Better actually keep quiet. No trading is the best strategy to be followed currently. Okay. BL is coming down only. Let us see till where it will come down. See, all these are actually important. These are all our single prints only. Yeah, anywhere here it will take support. Okay. Good. You have taken profit. Fantastic.
Right now, don't do anything. On the dip, we will again look at buying a call option only. Okay, somehow in BL, we are still getting that sell. See that what happens is all this selling has to come down. Because see, there is some selling. This needs to come down. And this is actually probably mainly because they are trying to hunt the stop loss, or it could be people who are taking the profit booking also. We have to wait. Bank Nifty, see both Nifty and Bank Nifty at that higher level, they are struggling. What do you want to hold? Why you have bought now? Don't buy now. At the dip, you can buy. See, now actually, once everything will come down, then only it will go up. It will not go up just like that. See, look at this. Currently, if you see the thing, 16,200, we have good amount of open interest. So what is going to happen is this actually is going to try to push the price down. See, until unless this will cross 1,40,000, it is sideways only. One good thing what I can see is we have got good amount of open interest happened here and here. Fantastic. This is looking very good. Put writers have come, fantastic. Now call writer actually has to move out. So till this call writer doesn't move out, he is not going to allow the market to go up. So at the lower level, put writers are going to help. But that doesn't mean that actually market will go up. At this point of time, there will be some dip because we have not got any big buying. See, this is not a big buy. This is definitely a big buy, but we need more follow-up buying. And Bank Nifty needs to support. Without Bank Nifty supporting, crossing this stiff resistance is not going to be easy. Don't buy PE. PE has failed. Okay. Put we tried buying, it has failed. So don't buy PE. It has to be call only, but it is supposed to be bought only when there is a dip. So wait for the dip. We have to have some patience, guys. There is no other opportunity. Because we tried, it has not working. So why should you try again? Look at this. Hindalco is definitely doing good. Only challenge is about the risk reward. Okay, 1 second. Hindalco. Hindalco, is it making a point of control? Point of control, is it shifting? Three 64, 366. Okay, good. Hindalco. 364. So that is the point of control. We need to hold this point of control and we need a big buying. Then actually we can look at any fresh momentum. Otherwise, this fresh momentum is not going to come, means actually we will not have any. You see, for intraday, it has already moved up quite a lot. So
Positionally only something is possible here. Intraday, we need much bigger buying again to come in. See, we will, if we keep taking 100 different stocks, it is very difficult to track, right? Okay. So we need to wait for BL, guys. We need to wait for this. It has come to our stop loss level, but that means we have to start see now it has to until it is not going to cross 257. There is no buy here. Okay, it has to cross this 257. So let's wait for it. It may take support somewhere else. Where it takes support, then we will see. Currently, institutional activity is what is happening here. This is all actually retail guys only. Whoever has bought today is only retail activity. Here there is definitely big volume. This is institutional activity. This cannot be a retail activity. So it can take support here, it can take support here, it can take anywhere the support. So it has to take support there, your risk reward will be better. Okay. So if you take a trade now, this is going to become your stop loss. So it doesn't make sense. Too big a stop loss. Okay, so let's see if there is any other stock which is making sense. Okay, let's look at Tata Motors. Tata Motors is at a resistance level. See, positionally, if Tata Motors needs to actually go beyond these levels, 455 plus, it has to start trading close above this. Then only there will be some good momentum which is going to come here. Let's see if there is any big buying which has come here. Yes, there is some big thing which has happened here at this place. Okay. See, we need to start trading about this, then only we can see something. 450. This is something it has to protect. So it has to protect this level of 448 and it has to start trading above 450. This is definitely a very big buy, good buy which has come. So the dip could be a good buy opportunity. See, after 12:30 only we should look at this because it won't make sense. Currently, market. Wow. Index is definitely doing good. There is no doubt. But again, definitely not a place for us to look at a entry kind of a thing. Okay, let's see if there is any other stock which is actually going to give us some opportunity. Tata Motor, yes, on a dip we can buy. There is definitely institutional activity here in Tata Motors. So this is definitely a institutional activity. It cannot be so much of buy in such small place. Here there is definitely big buy which has come. These are big orders, huge orders. They are going to protect that level. So any dip is a buy opportunity in Tata Motors also. The challenge here is again,
Stop loss will become deep here. See, it may take support anywhere here. This is again a single print. All these are actually very important, powerful places. So generally, we get a dip somewhere around 12:30. That is where it will make more sense. So we have good opportunity in Tata Motors. We have good opportunity in BL. We have good opportunity in case of TCS, as well as what other stock we saw. Uh, Hindalco. All these places we have good opportunities. Shashikant, are you a part of order flow mastery? Without that, you will not understand. This is completely to do with order flow. Okay. At the higher level, again, it is taking that resistance. So the resistance will be taken. There will be some dip which is going to come in. Since actually the sentiment is up, this all the stocks are already up. It is not actually easy for the market to come down. That is what is happening. That's all. Nothing more than that. And the VIX is also not moving. So in options, actually trading becomes very difficult. This has to be on the upside only. Otherwise, actually, it won't make sense. Okay, which other stocks are there? Okay. Rohit, Art Flow, we will start next month only. I will share you the previous recording. You can start actually looking at that. Weeks we need at least 18 plus will be better. For getting the data, you need the subscription mover. Okay, let's see what's happening in the SBI then. Okay, SBI is looking good. Okay, now we are just on the 60 RSI. Okay, great. This looks good. SBI is looking good. Okay, let's see what is happening in SBI. Any good buying is happening. Mhm. Not much. Let's look at in ICICI. Okay, nothing much here also. What about Axis? Not much here also. This is the problem. So there's no big buying which is coming in any of these major stocks of uh, banking. HDFC was anyway on the downside. Let's see what is happening in HDFC. Is there any big selling? Okay, there has been some good amount of selling which is there. So this is what is not actually allowing the market to move up. Order will be less if LTP is high. I didn't understand what actually you are talking about.
Okay, we are still on the upside only. So see, this may actually only after 130 only we may get a dip. If we get a dip, fantastic. If we don't get a dip, then we will see later. Because see, 2000, as long as we can hold 16,200, it is going to be very good for Nifty. And if it can hold above 35,000, it's going to be very good for Bank Nifty. So in that case, actually, we can continue to hold, but currently nothing is actually giving that kind of a confidence. Especially Bank Nifty has to actually give us that confidence because that is not happening. Probably what is happening is only limit orders are getting placed, and they are still buying on that limit orders. That is what is happening. So if they can sustain this 16,200, this is going to be very good, but there is a huge gap. That gap is extremely on the high side. So it's not easy until unless Bank Nifty is going to support. What are you talking? LTP is 10,000 into 100. What exactly you want to say? I am not able to understand. What does this has to do with LTP? Oh, oh, oh. Prices are definitely moving on the upside only, though without much of a buying. But this has slowly started coming from negative to positive, which is Bank Nifty. So let's see. We place buy order with stop loss, immediately place order for selling with target will affect the stop loss. Here, I am not able to understand. What is the question? We buy order with stop loss, immediately place order for selling with target. How how will it affect the? I can't understand your question. Will it affect the stop loss means what? See, if target is achieved, you actually have to remove your stop loss. Or if stop loss is achieved, then you have to remove the target. One of the thing. Oh, oh. See, currently, look at this. We are at 80 plus RSI. It is not sustainable here. Okay. 80 plus RSI is definitely not a very sustainable figure here. But anyway, at this point of time, buying is coming. We have to respect that. That's all. Let's see if any big numbers come. Okay, Bank Nifty actually has become positive. The delta has become positive cumulatively. How is 1 lakh delta in Nifty not equal to higher? See 300 plus. If the price is there, I am saying 2 lakh plus delta is okay. That only comes with experience. Don't actually think about some stocks it may actually come at lesser thing also. It depends on the stocks also. See, currently I don't see any reason for us to take any trade, guys.
It is definitely moving up, but the problem here is, will it sustain is the question. Because to 16,250 is a very strong resistance right now. Okay, that's a very strong resistance. So we need to see how much it is going to sustain here. Until unless we don't get big buying above that, there is all the possibility of getting a dip. Same thing here in case of Bank Nifty. Bank Nifty also nothing much has happened here. Let's Let me just update here once, because a lot of people are probably waiting for updates. One second. One second. See, the advanced decline, everything is looking good. So from that perspective, nothing much is happening here in any of these places. Currently, market is looking extremely strong. But as I said, this is a huge gap. And still we are not in a extreme bullish kind of a phase where we can accept this kind of a gap. So let's see if we're still not above the 60 RSI here on the daily time frame in both the indices. Okay, so that should act as a resistance. So let's see how actually it will work. Okay, now we are at an important level in case of Bank Nifty. Now let's see how actually Bank Nifty is going to react here. We need big buying coming here. This essential. 15 minutes is actually looking for all kinds of monitoring and all. Don't buy anything right now. Don't buy anything. Don't trade anything right now. Both places we will not have risk reward is not favorable to buy, not to sell. See what happens now in market like this, suddenly you will see a big red candle. What happens? So then actually what you will do? Then a lot of people will actually get out of it. So that is a place probably after that it gets settled, we will get a good opportunity on the buy side. So don't actually go and buy at these random levels. You will get stuck very badly. Because see, until unless the institutional investors are not here at this point of time, it is not there. They are definitely there at the lower side. They have actually been there. Okay. So at this level, they are not there. What data and VIX suggesting for any resistance? I am not getting Vijay what you are saying. See, currently VIX is actually on the negative side, which see VIX is negative, it is positive for the market. Okay.
But at the same time, when the VIX is low, volatility is low. So there is no big upside, no big downside. So from the option point of view time, you will not make money either if you are buying call option or a put option. So don't do anything. देखिए विक्स जब एक्चुअली नेगेटिव में जाता है तब एक्चुअली कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, ऊपर भी ज्यादा नहीं जा पाएगा, नीचे भी नहीं जा पाएगा। तो क्या करेंगे आप? तो आपका पुट में भी पैसा नहीं बनेगा, कॉल में भी पैसा नहीं बनेगा। अभी तो एक्चुअली विक्स नेगेटिव है, ऑप्शंस में ट्रेड मत करो, बेटर। कब ट्रेड करना है? थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा तब एक्चुअली बाई करके होल्ड कर सकते हैं, देखते हैं। एक अच्छा डिप मिलता है तो देखते हैं, वरना कुछ नहीं करेंगे। कोई ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे, तो बेटर है एक्चुअली कोई ट्रेड ना करें, वेट करें, इंतजार करें, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक स्ट्राइट लाइन की तरह बन गया ना, 80 RSI का, यहाँ पर सस्टेन होना मुश्किल है। कुछ मत कीजिए। थैंक यू विजित जी, थैंक यू। तो कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी हमारे पास कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। टीसीएस नहीं, टेक महिंद्रा में भी नहीं है। तो कौन सा देखते हैं? हमारा टाटा मोटर्स को देखते हैं। ओके, टाटा मोटर्स में सेलिंग खत्म हुआ क्या? टाटा मोटर्स क्या कर रहे हैं? ओके, देखिए कि यहाँ पर एक मिनट, ये कौन सा था? ओ, बीएल में ट्रेड ले सकते हैं भाई, बीएल में ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर अच्छा बाइंग आया है, बहुत अच्छा बाइंग आया है। ठीक है, बीएल के, बीएल में अच्छे सा ट्रेड है। यहाँ पर कौन सा ये लेवल है? ये 255 का ही है। 255 में भी अच्छा बाइंग आया है, 257 में भी अच्छा था, तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 254 हो जाएगा, तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ेगा अभी। या कोई डिप आता है तो आप एक्चुअली ले सकते हैं, या ये 257 से ऊपर चला जाता है तब भी आप ले सकते हो।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है और ये ऑल टाइम हाई पर भी है। अभी अभी फ्रेश बाइंग फिर से भी हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअली एक लेवल है, इसके ऊपर चला जाता है तो वो एक्चुअली यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आ जाएगा। देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर डालता हूँ, इसके ऊपर चला जाएगा तो बीएल में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका 245 244 बनेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बेटर है अवॉइड करो स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर लॉट साइज बहुत बड़ा रहता है, तो लिक्विडिटी का इश्यू रहता है। क्योंकि आप एक्चुअली वहां से हटोगे नहीं सही समय पर, तो एक्चुअली आपको एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेफरेबली ऑप्शंस में मत ट्रेड करो, ये होल्ड कर सकते हो। देखो ये तो ऑल टाइम हाई पर है, अच्छा बाइंग भी है, तो इसका मतलब है यहाँ से और अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, बीएल का ट्रेड तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉप लॉस 240 टू, एक मिनट, 254 है, 254 है आपका स्टॉप लॉस। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2 ढाई रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसके ऊपर चला जाता है, देखो 257 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ से एक्चुअली श्योर शॉट बाइंग है। ठीक है, 257 के ऊपर बाई, 254 आपका स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। आपका पहला टारगेट आपका 260 का बन जाएगा जो डे हाई है। तो आपका 1:1 का रिस्क रिवार्ड अभी के लिए है, और ये ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से एक्चुअली और भी बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर और भी अच्छा मूव मिल सकता है। यहाँ पर कुछ और नहीं है। इट कैन बी इंट्राडे, इट कैन बी पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ही बेटर रहेगा, बट इंट्राडे में मिल जाता है प्रॉफिट, निकल जाओ वहां पर। एक मिनट, डीएल में एक बार ओपन इंटरेस्ट कितना बना है, कितना बड़ा है ओपन इंटरेस्ट, अच्छा खासा बड़ा है, 5% का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है। नहीं, ओपन इंटरेस्ट नहीं, ये 5%, ओपन इंटरेस्ट 13% बड़ा है, अच्छा है, लॉन्ग्स बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स हमने देखा ना, टाटा मोटर्स देखा तो कौन सा और हमने बताया था आपको, एक और हमने आपको बोला था ना, बीएल का, टाटा मोटर्स, टीसीएस का मैंने बोला था आपको। टीसीएस में कुछ खास नहीं हो रहा है, टीसीएस का स्ट्रक्चर अच्छा है अभी के लिए। ठीक है, तो हमने और कौन सा एक्चुअली देखा था, हिंडाल को देखा था ना। तो हिंडाल को वही कर रहा है, ओके फैंटास्टिक, हिंडाल को था, हिंडाल को, हिंडाल, ओके अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग हो रहा है, बट एक्चुअली इसका बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ है यहाँ पर।
अच्छा खासा बाइंग हुआ है, कोई भी डिप में ये भी अच्छा ही है। और जब हमने बोला था ये 363 के आसपास था ना, ऑलरेडी 2 रुपए तो बढ़ गया है। हमारे जो लेवल था ना वहां से तो बढ़ गया है। हम तो यहाँ कहीं पर बोले थे ना आपको, यहाँ कहीं पर था शायद। हाँ, इसके ऊपर एक्चुअली बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है। हिंडाल्को तो स्ट्रांग है, हिंडाल्को भी पोजिशनल है। हिंडाल्को देखो, हिंडाल्को कल अगर ये इससे ऊपर चल जाता है 370 के ऊपर, एक्चुअली ये फ्यूचर का लेवल मैं बता रहा हूँ, से ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये एक्चुअली कप एंड होल्डर का पैटर्न है। तो ये 310 370 का मतलब है बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है इसमें। ठीक है, ये भी एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। देखो हिंडाल्को और आपका बीएल अच्छा ट्रेड बनेगा पोजिशनल के लिए, पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। टीसीएस भी अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। पर टीसीएस वगैरह में इतना ज्यादा मूवमेंट कभी आता नहीं है, कभी कभी आता है। ये सब तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है एनीवे, हिंडाल्को वगैरह तो स्टॉक स्पेसिफिक ही बेटर रहेगा हमारे लिए। देखो कुछ नहीं हुआ है, ऊपर गया, टिक नहीं पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने बोला आप एक्चुअली बेटर कुछ मत करो। कुछ नहीं हो रहा है, विक्स अभी नीचे है तो बेटर है। हम एक्चुअली देखो ट्रेंड तो ऊपर का है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बाई साइड में देखो अच्छा खासा कुछ मिल जाएगा। तो बीएल अच्छा है, हिंडाल्को अच्छा है, टाटा मोटर्स भी डिप में खरीदारी करने का ही है, टीसीएस भी डिप में खरीदारी करने का है। ठीक है, और कौन सा हमने बताया था आपको यहाँ पर? हमने एक दो, ठीक है, यहाँ पर और कोई था? विक्स अभी भी एक्चुअली चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो नीचे जाने के लिए जा नहीं रहा है क्योंकि एक्चुअली अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर भी जाने के लिए मुश्किल है इसको। तो यहाँ पर मार्केट जो है ना, इंडेक्स जो है, ये रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड ही रहेगा, ये खास कुछ नहीं करेगा। तो इंडेक्स को छोड़ दो आप आज के लिए, कुछ खास बनेगा नहीं यहाँ पर। थोड़ा बहुत डिप मिल जाता है तो एक्चुअली मिल सके, हम एक्चुअली बाई करने का देख सकते हैं, क्योंकि सेल करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। और देखो ऑलरेडी 1140 है, तो और कुछ खास हमको मिला नहीं है। हिंडाल्को जो मैंने आपको बोला था वो तो अच्छा मूवमेंट आ गया, ठीक है ना, इसका तो अच्छा मूवमेंट आया है हिंडाल्को का। बाकी के लिए मूवमेंट आना है, जब तक मूवमेंट नहीं आएगा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, ये सबको यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि हम ट्रैक करना आसान होगा। बीएल का फ्यूचर, एक तो बीएल का फ्यूचर था, एक हिंडाल्को का फ्यूचर। ठीक है, और टाटा मोटर्स, और कोई और हमने बताया था क्या? हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, टीसीएस में ये 3 4 मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो हिंडाल्को तो बहुत अच्छा चला गया, बाप रे बाप। देखो
जो अब तक बोल रहा था ना, बट प्रॉब्लम वही है हमारा रिस्क रिवार्ड के लिए। मैंने आपको इसलिए बोला था ये अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा करके, उससे नीचे तो गया नहीं और एक्चुअली ऊपर जाना स्टार्ट हो गया इसका। ओके, बीएल भी ठीक है। बीएल एक्चुअली इसको थोड़ा 257 के ऊपर जाना है, तो बीएल रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, टाटा मोटर्स अभी एक्चुअली रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाएगा, इसके नीचे 445। तो यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड इतना खास नहीं है, खास एक्चुअली चैलेंज नहीं है। 444 का या 440 कहाँ पर है, एक मिनट, लो कहाँ पर है, 445 है ना। हाँ, 445 444.5 आप एक्चुअली स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी खास एक्चुअली 2-3 रुपए का एक्चुअली आपके लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। सो टीसीएस, टीसीएस में भी अच्छा है, बट चैलेंज ये है कि ये लो तो ब्रेक कर ही सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस ये भी छोटा हो जाएगा, यहाँ कहीं पर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3063। मैंने आपको वो, जब हम बात कर रहे थे हम एक्चुअली बोल रहे थे कि 30 कहाँ पर 3030 का शायद आ सकता है, बट वो दिख नहीं रहा है कि आएगा। बट कोई भी डिप मिलता है तो टीसीएस भी अच्छा बाई है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अच्छा बहुत ज्यादा एक्चुअली बाइंग नहीं आया है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये मॉर्निंग स्टार वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत अच्छा है। देखते हैं कोई डिप मिलता है तो कहीं पर ले सकते हैं, वरना इंतजार ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, ये मेरे हिसाब से एक डिप मार सकता है। तो अगर ये डिप मारता है तो ये सारा स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा। ठीक है, उस समय पर ये चार स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट पर रख दो, टीसीएस, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, बीएल। ये ये चार स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जब एक्चुअली इंडेक्स जो है अगर यहाँ कहीं पर आ जाता है, देखो लो कहाँ पर बना है, 142 पर बना है, 16,142। मेरे हिसाब से 130 120 इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल ही है। अगर चला जाता है तो मैक्सिमम 16,080 है। अगर वहां पर मिलता है तो ये अच्छा बाई है। ठीक है, निफ्टी बहुत अच्छा बाई है। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी एक्चुअली चैलेंजिंग ही है, बट एक्चुअली बैंक निफ्टी भी अभी बाइंग पर ही आ जाएगा। तो पहले तो एक बार नीचे जाएगा, उसके बाद ही ऊपर आएगा। ठीक है, ये ऊपर एक्चुअली ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पर तो डबल टॉप बना दिया है इसने, तो यहाँ पर तो सेलिंग आ सकता है, बट सेलिंग बहुत ज्यादा उनका उम्मीद मत रखो। तो मैक्सिमम 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, इतने से ज्यादा का मूवमेंट आना मुश्किल है। ठीक है, अजय जी, बीएल का फ्यूचर इसीलिए देख रहा था क्योंकि हम ऑर्डर फ्लो देख रहे थे। ऑर्डर फ्लो तो हम एक्चुअली फ्यूचर में ही देखते हैं, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन फ्यूचर में ही है। फ्यूचर में ही एक्चुअली बड़ा बायर सेलर जो होता है ना, वो फ्यूचर में ज्यादा रहता है। तो वो हेज के लिए या कुछ भी करने के ना वहां पर रहते हैं। इन्फी का अभी रिजल्ट अभी 2-3 दिन, नेक्स्ट वीक में शायद आ रहा है ना, तो ये यहाँ पर थोड़ा उसके लिए शायद अभी ही चला जाएगा, तो वहां पर वो हो सकता है कि एक बार गिरा दे उसको।
देखना पड़ेगा। रिलायंस जब तक 2350 के ऊपर है बाइंग ही है। तो टीसीएस अभी भी एक्चुअली ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। डिप मिलता है तो ठीक है। दिलजीत जी, डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन मत लो, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रीड करना है। खाली सब्सक्रिप्शन लेकर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखो फिर भी बाइंग ही हो रहा है, बट यहाँ पर कोई बड़ा बाई नहीं है। तो क्योंकि बड़ा बाई नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली मुश्किल है। स्टॉप लॉस हंट अभी भी बाई साइड का हो रहा है, तो हो सकता है इसको होल्ड भी करें, पता नहीं है क्या करेंगे। $15 होगा कॉस्ट आपको, $15। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक स्पेसिफिक बाई करने में ही फायदा है। यहाँ पर इंडेक्स में, इंडेक्स शायद एक्चुअली एक रेंज में ही एक्चुअली ट्रेड करेगा, इतना खास दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर तो अच्छा खासा एक्चुअली पीसीआर हुआ है। हम्म, इसके हिसाब से तो मुझे खास नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। ये जाएगा तो फिर से एक बार डे लो तक जा सकता है, उससे ज्यादा जाने का दिख नहीं रहा है मुझे। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है जो आपका। देखो अभी के लिए बाई करना है तो प्रॉब्लम है। अभी तो मैं भी बाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा मैंने एक्चुअली एग्जिट कर लिया था मेरा एक्चुअली पोजीशन। मैं अभी भी इंतजार करूंगा। बैंक निफ्टी तो अभी भी वीक ही है, अभी भी एक्चुअली उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा है। यहाँ पर भी पीसीआर बैंक निफ्टी का अभी भी 35, पीसीआर लेस देन 1 ही है ना। हाँ, पीसीआर ग्रेटर देन 1 हो गया, अच्छा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ग्रेटर देन 1 हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा बात है, तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स हो गया। तो इसके ऊपर उसको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, जब तक ये देखो, ये 1,25,000 है, ये 86,000 है, जब तक ये एक्चुअली इसको कम होना है, उसको बढ़ना है। जब तक ये नहीं होगा, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। डिप्स में खरीदारी ही है, उसमें एक्चुअली कोई डाउट नहीं है। बट कहाँ डिप आएगा, कब डिप आएगा, ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है ना, ये एक बार वो क्या कर लेते हैं ना, ये एक बार एक्चुअली अचानक से गिरा देते हैं, और उसके बाद एक्चुअली वहां से वो क्या करते हैं ना, वो सेल करके बाई करते हैं ना। तो वो सारा चीज हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा एक्चुअली बेटर है कि रैंडमली ऐसा कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। देखो थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हायर प्राइस पर बाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कहीं पर बाई करके फंस जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो आप बाई करेंगे उसके बाद गिर जाएगा, तो ये नहीं होना है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमको वो इंस्टीट्यूशनल वाला थोड़े बड़ा बाइंग दिख नहीं रहा है। निफ्टी में एक्चुअली जो दिखा था वो तो
देखो ये एक बड़ा बाई जो इंस्टीट्यूशन वाला आता है वो एक ऑर्डर ही एक्चुअली 1 लाख से ऊपर होता है, उतना तो हमको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए तो ये एक बार तो डिप आना जरूरी है, कितना आएगा वो पता नहीं है। सेम चीज है ना, बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करता है तब तक प्रॉब्लम ही है। 35,000 के ऊपर हमको बड़ा बाइंग चाहिए, उसके बाद ही एक्चुअली इसमें स्ट्रेंथ आएगी। ट्रेडिंग व्यू कहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस देगा? ट्रेडिंग व्यू नहीं देता है ना। अभी तो खाली इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते guys। देखो मैं मैक्सिमम 12:30 तक रहूंगा, अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं दिखता है, जब एक्चुअली 80 RS पर ऐसा कर देता है ना, एक स्ट्राइट लाइन की तरह किया है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये एक बार एक डिप मारेगा ये। उसके बाद ही हम हमारा स्टॉक्स भी देखेंगे। स्टॉक्स भी क्या होगा, ये डिप आ सकता है, जनरली 12:30 बजे के आसपास आता है एक डिप, तो वहां पर हम देखेंगे। अगर अच्छा मिल जाता है, प्राइस अच्छा मिल जाएगा, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो बीएल में 357, सॉरी 257 के ऊपर तो बाई है, क्योंकि बड़ा बाई है और सुबह से है, और अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया है इसने। एक मिनट है, बीएल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेंज हुआ है शायद 256.55। वाह। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल अच्छा खासा बन रहा है, ये अगर बन जाता है तो अच्छा है, स्टॉप लॉस एक्चुअली छोटा एक्चुअली हो जाएगा और अच्छा टारगेट मिलेगा यहाँ पर। रघु, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लुकिंग एट डेली टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम पर देखकर ही तो हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस तो डेली टाइम फ्रेम में ही होता है। हाँ, देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, अच्छा है, देखते हैं। देखो पुट लेकर एक्चुअली फंसना नहीं है, फिर से प्रॉब्लम वही है। छोटा आप टारगेट के लिए क्या करोगे, पुट पुट ले सकते हो, बट प्रॉब्लम वही है, रिस्क है। फिर से यहाँ पर कहीं बड़ा सेलिंग दिखेगा तो हम पुट ले सकते हैं, तो वो तो दिख नहीं रहा है ना। तो डिप तो मिलेगा, 50 पॉइंट का डिप मिल सकता है निफ्टी में, 100 पॉइंट का डिप मिल सकता है बैंक निफ्टी में। देखो पुट के लिए हमको 60 RSI से नीचे जाना पड़ेगा, वो उससे पहले एक्चुअली जाने के वहां पर प्रॉब्लम वही होता है कि बार बार एक्चुअली ऊपर जाने की कोशिश करता है और हम वहां पर फंस जाते हैं। छोटा छोटा टारगेट के लिए मत करो, थोड़ा बड़ा टारगेट मिलता है तभी करेंगे। देखो पुट के लिए ही है अपॉर्चुनिटी अभी के लिए, कॉल में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल पर है यहाँ पर। कॉल का करेंगे क्या, ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं है। बट पुट में भी एक्चुअली बहुत छोटा टारगेट रखना है और निकल जाना है, वो कर पाओगे तो करो वरना मत करो ट्रेड।
और ये जब डिप आ जाती है हमारा, उस समय पर हमारा ये सारा स्टॉक अच्छा प्राइस पर मिल जाएगा आपको। देखो टीसीएस का डिप मिल रहा है, थोड़ा कहाँ तक डिप मिलता है देख लेते हैं। ये भी टाटा मोटर्स भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। हिंडाल्को देखो कहाँ तक गया, ये हाई कहाँ तक बनाया इसने, 366.35 तक बनाया है। अभी थोड़ा सा अटक रहा है, तो ये भी वही का वही है। देखा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि डिप आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनल का बाइंग नहीं है, ये सारा रिटेल का बाइंग है। तो रिटेल का बाइंग है तो एक बार डिप आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल का बाइंग है नीचे के लेवल पर, नीचे के लेवल पर बाइंग है उनका, वो तो वो डिफेंड करेंगे। एक मिनट में देना, ये वाला देख लेता हूँ। मुझे थोड़ा अपडेट करना है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट। ठीक है, देखते हैं। अभी भी वही प्रॉब्लम है, देखो थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, परेशान करके रख देगा। आप एक्चुअली पुट लोगे वही प्रॉब्लम रहेगा। तो बेटर है वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाता है ना, थोड़ा बहुत नीचे आता है एक्चुअली, आप वहां पर एक्चुअली पुट में थोड़ा सा पैसा बनता है, आप एक्चुअली निकलते नहीं हो, तो एक्चुअली फिर से जब वो यू टर्न मारता है ना आपका, एक्चुअली जो भी पैसा बना है वो भी निकल जाता है। तो ये बेटर है एक्चुअली वेट करो, कोई बाइंग में ही पैसा है, क्योंकि पोजिशनली मैंने आपको व्यू बता दिया ना। मेन चैलेंज यही है कि ये जो आपका बैंकिंग स्टॉक्स में इतना मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो वहां पर एक्चुअली थोड़ा बहुत वहां पर शायद लिमिट में बाई कर रहे हैं, कोई एक्चुअली मार्केट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो एक बार वो सारा पोजीशंस बन जाएगा, उसके बाद एक्चुअली कोई मार्केट ऑर्डर आएगा, तो उसके लिए देखो 16,050 आपको बताया था लेवल, उसके ऊपर एक्चुअली आया था एक बड़ा बाइंग, यहाँ पर 35,000 के ऊपर बड़ा बाइंग आना है। ठीक है, वहां तक एक्चुअली ये लोग वही करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्योंकि विक्स बढ़ नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है करने का ट्रेड, क्योंकि आपका ऑप्शन तो बढ़ेगा नहीं ट्रेड।
मेरे हिसाब से इन सब वायर जो भी सुबह सुबह आए हैं ना, इन सब का स्टॉप लॉस एक बार हटा देंगे ये लोग। देखते हैं, अगर वो कटा सकते हैं तो और भी तेजी आ सकती है। वो नहीं कटाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, वो पता नहीं है क्या करना चाहते हैं। छोटा स्टोर का स्टॉप लॉस जिसका भी बनता है उन सबका तो हटा दिया है उन्होंने। तो देखो अभी मेन चीज क्या है, अगर इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर शायद इसके ऊपर बाइंग बन जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे ये लोग। यहाँ पर भी देखो, इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। डे लो को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ही मेजर चीज है अभी, क्योंकि निफ्टी का जो भी फ्यूचर है ये सब बैंक निफ्टी के आधारित हो रही है। निफ्टी में ऑलरेडी एनीवे आईटी इंडेक्स स्ट्रांग है, तो वहां पर गिरने के लिए वो नहीं छोड़ रहे। अभी ऊपर आने के लिए बैंक निफ्टी नहीं छोड़ रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर चला जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर चला जाएगा। तो अभी सब कुछ बैंक निफ्टी पर ही डिपेंडेंट है। बैंक निफ्टी में तो कोई भी ऑर्डर नहीं है, देखो मार्केट ऑर्डर्स तो लगभग नील ही देखो। 20,000 तो कुछ है नहीं है इसका। यहाँ पर तो अच्छा खासा है, बट एक्चुअली देखना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी अजय जी, नेसेसरी नहीं है कि सारा गैप फिल हो। अगर उनको एक्चुअली अगर मार्केट स्ट्रांग है तो हो सकता है कि ये गैप फिल ना हो। हमारा पहला भी गैप फिल नहीं हुआ है बैंक निफ्टी वाला। एक गैप अभी भी है 34,200 के आसपास, 200 300 के आसपास। वो गैप फिल नहीं हुआ है, बट उसके लिए ये बैंक निफ्टी को 35,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। वो देखते हैं कि अगर ये बैंक निफ्टी कर पाता है तो एक्चुअली हो सकता है कि वो अभी गैप इमीडिएटली तो फिल नहीं होगा और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। शोएब जी, वही तो हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में करते हैं ना। ऑर्डर फ्लो में वही हम कर रहे हैं। तो अभी के लिए तो और कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं 12:30 बजे तक। एक्चुअली अगर मार्केट यही ऐसे ही ऊपर नीचे करेगा, खास कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ पर अगर ये इसको प्रोटेक्ट कर पाता है, 16,170 के ऊपर रहता है मार्केट, तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं करेगा, पूरा दिन ऐसे ही करता रहेगा। एंड ऑफ द डे में हम एक्चुअली फिर से बाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन पर है, बट यहाँ से एक्चुअली ऊपर जाने का ही उसका चेष्टा है। बट मेन चीज क्या है ना, इंडेक्स शायद एक्चुअली कंसोलिडेट ही करेगा, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा। नहीं, कोई नीचे नहीं जा रहा है ना। बैंक निफ्टी में बैंक एच डी एफ सी बैंक का वेटेज ही ज्यादा है, बहुत हाईएस्ट वेटेज है। वो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है तो बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा है। देखो ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, मैं वही बोल रहा हूँ। मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रहा है। जहाँ है वो वहाँ ही है, और कुछ नहीं है। आप देखो पूरा दिन क्या कर रहा है, घुमाता रहा है, यहीं पर घुमाता रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा नीचे आया था, वहां से एक्चुअली अचानक ऊपर आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहा है ना, मार्केट कंसोलिडेट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
अगर ये सस्टेन कर पाता है तो अच्छी बात हो जाती है, सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक डिप आएगा, वहां पर फिर से बाइंग आ जाएगी, उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। देखो अभी मार्केट 16,200 के ऊपर एक्चुअली बंद कर देता है तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा बैंक निफ्टी का 35,000 के ऊपर सस्टेन होना है, एक बार ये दोनों हो जाएंगे तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ खास कुछ बन नहीं रहा है, तो हम कुछ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, खाली इतना ही है। क्या होगा देखो, ऊपर नीचे ऐसे ही करता रहेगा तो एंड में हम लेंगे ना, बाय द एंड ऑफ द डे हम खरीद सकते हैं, अभी खरीद के क्या करेंगे, क्योंकि वो तो प्राइस तो ऊपर नहीं जाएगा ना। राजा सिंह नो ऑडियो, ऑडियो है ना, ऑडियो का क्या प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। और देखो टीसीएस भी देखो नीचे गया, वहां पर फिर से सपोर्ट, तो कुछ कर नहीं रहा है मार्केट, छोटा सा डिप है वहीं पर बाइंग आ रही है। ये तो और भी ऊपर चला गया, देखो हिंडल को, ये एक्चुअली ऊपर चला गया, देखो ये एक्चुअली आपका बीएल तो बाई है, मैं आपका बीएल बाई कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, मैं आपका बीएल बाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि 3,800 का लॉट साइज है, ठीक है, 1 रुपए मिलता है तो 3,800 मिल जाएगा आपको, तो ये एक लॉट एक्चुअली कम हो जाएगा तो आपको लॉस भी एक्चुअली उतना ही होगा, तो उस पर ध्यान दो और ज्यादा मत करो, कुछ भी करते हो ज्यादा मत करो, ज्यादा लालच मत करो, ठीक है। एक मिनट, देखो मैं जनरली ऐसे ही नहीं लेता हूँ ट्रेड, जब तक एक्चुअली हमको सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है ना, तब तक मैं ऐसे ही ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे बीएल का सब कुछ ठीक दिख रहा है, हिंडाल को है बट हमारे लिए रिस्क अभी भी ज्यादा है। टाटा मोटर्स तो अच्छा है, टाटा मोटर्स अच्छा है, बट डिप मिलेगा देखना पड़ेगा।
डिप नहीं मिलता। देखो देखो अभी कहाँ पर है, 447 है ना। 447 का मतलब है हमारे लिए 2 रुपए का रिस्क है। 2 रुपए का रिस्क एक्चुअली फ्यूचर में वो लॉट साइज पर डिपेंड होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी के लिए तो मेरे हिसाब से खाली बीएल में ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बीएल में ही ठीक ठाक दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ तक भी आए। ठीक है, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहीं पर एक अच्छा सा, देखो इस 357 के ऊपर एक्चुअली सस्टेन होना है। देखो फिर से ऊपर आ गया, यही प्रॉब्लम है इसका। तो ये ऊपर ही नीचे करता ही रहेगा। ओवरऑल कंडीशन तो बुलिश ही है। ठीक है, मार्केट तो बुलिश है। स्टॉक स्पेसिफिक ही आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये तो। ओके, 1 मिनट ठहरो। हमारा 35,000 के ऊपर चला गया है। अभी हमको क्या होना है, हमको यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर हमको 40,000 का डेल्टा चाहिए। 40,000 का डेल्टा मिलता है तो यहाँ पर बाइंग है, हमारे तरफ से मोमेंटम बाइंग है। प्रकाश जी, ऑप्शंस में ट्रेड करना मुश्किल है। आप एक्चुअली ऑप्शंस में ट्रेड मत करो, मैंने आपको पहले भी बताया। आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का, वो बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम का इश्यू है। कर सकते हो, बट एक्चुअली आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्डली 4-5 हजार एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर ट्रेड हो रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये VL 5% 10% ऊपर चला जाएगा ना, तो वहां पर लिक्विडिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। बट ये लिक्विडिटी का इश्यू है। तो अभी भी एक्चुअली 40,000 के ऊपर नहीं गया है, तो ये एक्चुअली फिर से नीचे आ सकता है। यहाँ पर ये सस्टेन होना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं खरीदना है, मैं यहाँ पर नहीं खरीदारी करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। ये 35,000 के ऊपर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी 16,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं बाय द एंड ऑफ द डे मैं खरीदारी करूंगा, अभी नहीं करूंगा। क्योंकि ये ऊपर नीचे करता रहेगा। वो देखो फ्यूचर में कर सकते हो आप, फ्यूचर में कर सकते हो, ऑप्शन में नहीं करना है। अरे विजय जी, आ जाएगा ऊपर, बट प्रॉब्लम वही होता है ना, आप एक्चुअली एग्जिट में प्रॉब्लम आ जाती है अगर लिक्विडिटी का इश्यू है। आपको करना है तो करो, मैंने आपको बता दिया है। देखो BL का ट्रेड अच्छा है, यहाँ पर भी देखो बाई ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है कि ये कभी भी डिप आ सकता है, ये खाली ये इश्यू है। अगर ये हमारा, कहाँ पर है, ये जो आपका ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस जो है, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये 137 है ना, ये इसको 137 के ऊपर जाना है या इसको कम होना है, वन ऑफ द टू होना है। जब तक ये नहीं होगा ये साइडवेज ही है। ठीक है,
तो प्रॉब्लम वही होगा। लो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही है, बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आप देख लो, आप रिस्क ले सकते हो तो करो, मैंने कब मना किया है। प्रॉब्लम लिक्विडिटी का इश्यू है, लिक्विडिटी का इश्यू है, फिर भी आपको करना है तो कर सकते हो। वहां पर 5-10% अगर बढ़ जाता है ना, तब एक्चुअली आपके लिए अच्छा पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो हो सकता है कि ऑप्शन में ज्यादा मूवमेंट नहीं आए, 1-2% में ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है। देखो प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट रिस्क तो है, मेरे हिसाब से रिस्क है। क्योंकि यहाँ पर मैं, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स का ही बाई है, और ये रिटेल इन्वेस्टर का बाई है, तो ये लोग तो एक बार ये सब का स्टॉप लॉस हंट कर देंगे। तो मुझे नहीं करना है यहाँ पर ट्रेड। विंडेक्स में एक्चुअली वेट ही करिए, वेट करिए, यहाँ पर मत ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस में तो ट्रेड करना मुश्किल है, जब तक मैंने आपको बताया ना, जब तक वो नहीं खत्म होता है तब तक एक्चुअली ये साइडवेज ही है। देखो हमको थोड़ा महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि विक्स नीचे है। देखो अगर ऊपर भी जाता है, वो कॉल ऑप्शन ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, प्राइस नीचे भी आता है, पुट ऑप्शन ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, तो करोगे क्या आप ऑप्शन बाई करके? दोनों में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वेट करो, डिप मिलेगा तभी करो, वरना मत करो। अचानक एक बार एक्चुअली वो आपका सारा स्टॉप लॉस कट कर देंगे, क्या करोगे आप? पूरा एक बार नीचे कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप एक्चुअली हट जाओगे, उसके बाद वो फिर से खींच देंगे ऊपर। देखो मार्केट तो ऊपर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप कैरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बाई नहीं बनती है। देखो टीसीएस फिर से ऊपर चला गया, देखो हिंडाल्को को अभी गिरा दिया, क्या करोगे? मैं बोल रहा था ना, डिप मिल सकता है, क्या करोगे आप? वेट करो, यहाँ कहीं पर मिल जाता है अच्छा, देखो 1230 के आसपास आपको एक अच्छा डिप मिलता है, ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन है 360 का। आपको 362 361 यहाँ कहीं पर मिल जाता है, अच्छा बाइंग है, हिंडाल्को उस समय पर कर सकते हो। पीएल यहीं पर अटक रहा है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम है। 2-3 बार हिट हुआ है, क्यों करना है ट्रेड आप बताओ? फिर से पैसा बर्बाद होगा, क्या करोगे आप? पुट बाई करोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, कॉल बाई करोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो यहाँ पर कैंडल स्टिक को देखोगे, सब कुछ देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने मिस कर दिया है, बट एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, रिस्क है यहाँ पर, कभी भी स्टॉप लॉस कट कर सकते हैं। आज नहीं, क्या ठीक है। देखो आज भी एक्चुअली क्या हुआ है कि पुट का हमारा स्टॉप लॉस कट गया, तो अभी कॉल के लिए अभी तो मुझे तो नहीं कॉन्फिडेंस है, अभी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि विक्स अभी घट रहा है, अभी भी घट रहा है। विक्स बढ़ेगा तो मैं एक्चुअली करूंगा कुछ। यहाँ पर तो मेरे एक बीएल पर ही कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है, और एक्चुअली हिंडाल्को है, बट एक्चुअली यहाँ पर डिप मिलेगा, मैंने बोला था ये डिप एक्चुअली मिलेगा, शायद थोड़ा और एक्चुअली नीचे आएगा, नीचे आकर उसको थोड़ा सस्टेन करने दो, वहां पर एक्चुअली बाइंग आएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा एक्चुअली नीचे आता है तो एक्चुअली अच्छा है, तो नीचे आने दो उसको, नीचे आएगा तो खरीदारी करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन कुछ नहीं करना है बोला ना, फिर से आप वही पूछ रहे हो।
देखो कॉल और पुट के लिए अभी देखो कॉल मूवमेंट देगा 16 के ऊपर विक्स रहेगा तो, बट प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअली विक्स नीचे हो रहा है तो एक्चुअली कोई भी बढ़ेगा नहीं खास। हिंडाल्को में थोड़ा बहुत एक्चुअली ऑप्शंस में ये होती है, लिक्विडिटी होती है, बट एक्चुअली थोड़ा वेट करो, अभी डिप आ रहा है तो उसका थोड़ा एक्चुअली रुको, अगर जब नीचे आता है तो वहां पर अचानक बाई नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा नीचे आ सकता है तो क्या करोगे? जब नीचे आता है तो जब तक एक्चुअली यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं लेता है तब तक एक्चुअली कुछ नहीं करना है। हिंडाल्को का देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक मिनट बीएल का क्या हुआ है। यहाँ पर ठीक है। ओके, हिंडाल्को अच्छा खासा सेलिंग आया है, तो सेलिंग होने के बाद उसको सस्टेन होना है। अभी देखो वेट करो इसको, थोड़ा सा वेट करो उसको। जितना बाइंग हुआ था उससे आधा तो सेल हो गया, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं, तो इसका मतलब है प्रॉफिट बुक हुआ है जो भी वीक प्लेयर्स है। इसको सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है, अगर ये सस्टेन कर लेगा तो ठीक है। ये हमने फ्यूचर ही देखा है ना, हाँ फ्यूचर है, तो इसको ये इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना। अगर ये सस्टेन करता है तो देखेंगे, अगर ये इससे नीचे जाता है तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा हम नहीं करेंगे कुछ भी। 363 के आसपास, 362 363 के आसपास उसको आना है, उसको सस्टेन होना है। जो ये अभी लो बना है ना, ये एक्चुअली सस्टेन करता है कि नहीं करता है देखना पड़ेगा। अगर ये इससे थोड़ा नीचे आ जाता है यहाँ पर, देखो बेटर यही रहता है यहाँ पर, जब ये से एक्चुअली बड़ा रेड कैंडल हो जाता है ना यहाँ पर, थोड़ा बहुत यहाँ पर टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर ये टिक जाता है यहाँ पर ऊपर नीचे करके तो यहाँ पर अच्छा बाइंग मिलेगा, स्ट्रांग रहता है वहां पर। तो वैसे ही एक्चुअली रैंडम बाई करके कोई मतलब नहीं बनता है। देखो फिर से वही हालत है, देखो ऊपर गया फिर से प्रॉब्लम है, 227 तक गया है, वहां पर फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं क्या करेगा ये। गुरुदास जी हमने पहले ही लेकर बैठ गए थे ना, हमने तो एग्जिट कर लिया सुबह सुबह। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत और ऊपर गया, हमको एक्चुअली वो लालच नहीं था, हम पहले ही निकल गए थे। क्योंकि देखो ऊपर जा सकता है, 200 जा सकता है, 250 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जाने का उसके पास नहीं है शक्ति, अभी तो नहीं है। अगर आज एक्चुअली इसको सस्टेन कर लेता है, देखो इतना बड़ा गैप है, उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। अगर उसके लिए बैंक निफ्टी को सपोर्ट देना पड़ेगा, बैंक निफ्टी सपोर्ट देगा तो निफ्टी ये होल्ड कर पाएगा। क्या हमको होल्ड करना है नहीं करना है वो सब उसी पर डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी 35,000 को होल्ड कर लेता है तो
अच्छी बात होगी। देखो 12:30 के आसपास जनरली एक डिप मिलता है, तो हम उसका थोड़ा इंतजार करेंगे, देखेंगे डिप मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा। अब अभी ऑप्शंस का 16,000, आप बोलो 16,000 कितना हुआ है? 16,000 इसका देखते हैं, 16,100 का कॉल, अब 181 था ना, तो ये 16,000 वाला कॉल भी क्या था? 16,000 वाला कॉल 260 हुआ है, तो कहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर हुआ था ये? देखो ओपन हुआ था 181 तक, अभी कितना गया है? 40-50 पॉइंट एक्चुअली गया है इसका ऊपर, बहुत ज्यादा एक्चुअली नहीं गया है। देखते हैं क्या करेगा। मेन चीज क्या है ना, यहाँ पर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती है, यही प्रॉब्लम होती है। विक्स अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक बार थोड़ा बहुत डिप आना जरूरी है, आ सकता है, आएगा तो वहां पर हम खरीदारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया है। देखो आईटी ने एक्चुअली मार्केट को ऊपर के लिए होल्ड करके रखा है, और बैंकिंग ने मार्केट को नीचे एक्चुअली उतना ऊपर जा नहीं पा रहा है। पुट नहीं खरीदना है, पुट क्यों खरीदना है आपको? अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा, पुट नहीं खरीदना है, कॉल ही खरीदना है, बट डिप पर खरीदना है, यहाँ पर नहीं खरीदना है। मार्केट स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे 50 पॉइंट आ सकता है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 50 से 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं है निफ्टी में डिप। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट या 150 पॉइंट से ज्यादा नहीं है डिप, इतना ही है डिप, डिप ज्यादा नहीं मिलने वाला है। बहुत ज्यादा का उम्मीद मत रखो, या पहले वाला डिप ही एक्चुअली है, वो भी हमको पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए इसको सस्टेन होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो बैंक निफ्टी ने पीसीआर ग्रेटर देन 1 भी कर दिया, तो उस वो भी एक्चुअली अभी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया है, सुधर गया है वो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, हम 12 and 16, तो देखो ये 133 है, ये 127 है, ये अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है बाइंग डेफिनेटली आ रही है। देखो ये 127 तक चला गया है, ये 133 है, तो कोई डिप मिलता है अब अभी तो यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर सेल करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1,12,000 है,
देखो ये 1,12,000 है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख तक आ गया, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ये पीसीआर ग्रेटर देन 1 भी हो गया, तो अभी के लिए तो बहुत स्ट्रांग हो गया है मार्केट। ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। कोई भी डिप मिलता है यहाँ पर बाइंग ही बनेगी। विदेशी मार्केट क्या कर रहे हैं, वहां पर कहीं पर कोई डिप है क्या, या यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग है? वहां पर भी आधा परसेंट 1% का ऊपर है, तो वहां पर भी अच्छा खासा, अच्छा ही है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। कोई भी डिप मिलता है यहाँ पर हमको 16,100, 16,200 का कॉल हम खरीद सकते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी 35,800, 900, 35,000, सॉरी 34,800, 900 या 35,000, इसका कॉल हम खरीद सकते हैं। अभी नहीं खरीदना है, डिप मिलेगा तभी खरीदना है। ये एक छोटा सा डिप तो मिलेगा, एक बार तो ये 16,200 से नीचे जाएगा, एक बार तो ये 35,000 से नीचे जाएगा। तो जब ये जाएगा तब एक्चुअली खरीदना है। हो सकता है, देखो ये प्रोटेक्ट करेगा ये लेवल 16,170, इसको प्रोटेक्ट करेगा, तो बहुत अच्छा है। यहाँ इसको भी प्रोटेक्ट कर लेगा तो और भी अच्छा है, नहीं इसको शायद एक्चुअली तोड़ सकता है, या यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, यहाँ कहीं पर भी आ जाता है तो वहां पर बाइंग बनती है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्चुअली नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअली पुट खरीद के कोई मतलब नहीं है। और ये 60 के ऊपर गया है क्या, नहीं गया, ये भी नहीं गया, वो भी नहीं गया। ठीक है, कल से एक्चुअली बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा मार्केट इसके हिसाब से तो। देखो डेली अगर हम 60 के ऊपर चले जाएंगे आरएसआई में, तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हो जाएगा वहां पर विक्स भी थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो टीसीएस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आने दो इसको। ओके, टाटा मोटर्स ने अच्छा सपोर्ट लिया है। हाँ देखो हिंडाल को थोड़ा बहुत और भी नीचे आ रहा है, उसको आने दो यहाँ पर, थोड़ा बहुत उसको सस्टेन होने दो, उसके बाद यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। ये भी देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ये एक एक्चुअली एक रेंज बना रहा है, तो ये एक रेंज बनने के बाद यहाँ से एक बार ऊपर उठेगा वो। देखो टीसीएस में बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, ठीक है, तो बट वहाँ का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो पोजिशनली ये सारा चीजें बाइंग पे आ गई है। टाटा मोटर्स, टीसीएस, हिंडाल्को, बीएल, जो हमने चार स्टॉक आपको आज हम जो हमने ऑर्डर फ्लो के हिसाब से आपको बताया है। ठीक है, हिंडाल्को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर।
थोड़ा बहुत तो आ रहा है, जितना आएगा शायद उतना ही है, बहुत ज्यादा का उम्मीद करने को कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन में भी वो दिख रहा है कि वो अभी उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे गिराएंगे। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस हंट वो अभी भी कर रहे हैं। तो 5-5 मिनट में छोटा छोटा जो भी स्टॉप लॉस है वो उनको हंट कर रहे हैं, बड़ा स्टॉप लॉस को हंट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद है वहां पर। अरे राडू जी, थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो वही का वही है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? वही का वही तो है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ये। हमारा स्टॉप लॉस तो 354 का है, इससे नीचे नहीं जाना है इसको। यहाँ पर अच्छा बायर है, बैठा हुआ है, तो वो एक्चुअली आपको नीचे जाने नहीं देगा वो। यहाँ पर भी कुछ खास सेल नहीं आ रहा है, बट देखते हैं कि क्या करेगा ये। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है वो नीचे एक्चुअली लिमिट प्राइस पर ही बाई कर रहे हैं, हो सकता है, बट वो एक्चुअली अभी के लिए यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है। ये थोड़ा विक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो जनरली यहाँ पर जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट थोड़ा घटना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या होगा। थोड़ा गिरावट आएगा तब वहां पर खरीदारी करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना 12:30 to 1:30, यहाँ पर एक जनरली एक डिप आता है। यहाँ पर हमारा ये हाईएस्ट वॉल्यूम क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है, देखो 131 हो गया, 133 है, तो यहाँ पर तो ये ओवरटेक करने के लिए पूरी रेडी हो गए है। बट आज के लिए मैक्सिमम ये 250 या 300, 250 जाना ही थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं। ऑप्शंस में तो हमको दिख रहा है कि पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुअली दिख रहे हैं, और कॉल राइटर्स एक्चुअली कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो कॉल राइटर शायद हट जाएगा बाद में।
मुझे कहीं दिख नहीं रहा जाएगा ये। शायद यही डिप जो डिप पहले आया था वही शायद डिप है, उससे ज्यादा का डिप को कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पर। वन फिफ्टी, सो 253 है। We need 253. Above 253, we need big buy. यहाँ पर एक्चुअली जो फ्यूचर का लेवल है 253 के ऊपर हमको एक बड़ा बाइंग चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ का कहा था ये 559। तो क्लोजिंग यहाँ पर एक्चुअली यहीं पर कहीं पर हो जाता है तो अच्छा है ये। कुछ खास एक्चुअली सेलिंग नहीं आ रही है। डिप हम जो कोशिश कर रहे हैं वो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। क्योंकि बाकी सारा स्टॉक्स जो है ये सब तो अच्छा खासा कर ही रहा है। ऑप्शंस में अच्छा है, यहाँ पर देख लेते हैं। सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, कुछ खास एक्चुअली नीचे जाने का दिख नहीं रहा है। क्योंकि इतना बड़ा गैप के बाद एक्चुअली बाई करना बहुत मुश्किल है इंडेक्स में। अरे थोड़ा बहुत नीचे आएगा दिलजीत जी, कोई फर्क मत करो उसका। पुट ऑप्शन बेच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 34,500 का भी बेच सकते हो आप। ये तो स्ट्रांग ही दिख रहा है भाई। यहाँ पर तो एक्चुअली 35,000 के ऊपर भी आ गया, होल्ड भी कर लिया। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ खास एक्चुअली नीचे नहीं दिख रहा है। कोई भी डिप में बाई ही करना है, यहाँ पर कोई एक्चुअली ऐसा खास नहीं दिख रहा है। बट पता नहीं है, ये 250 के ऊपर एक्चुअली सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्चुअली ऐसा भी कर सकता है कि देखो हर बार ये होता था ना 1:32 के आसपास फिर से ये एक बड़ा सेलिंग आ जाता था, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा, बट वहां पर एडवांस डिक्लाइन इतना अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे तो आ सकता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, शायद डिप हमारा 16,180 170 यही मैक्सिमम डिप है। तो बहुत ज्यादा डिप हम दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी में शायद ये एक बार 35,000 से पास फिर से आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो अच्छा तो है, बट
वही प्रॉब्लम यही है। देखो ये काम आप कर सकते हो, आप चाहे तो थोड़ा बहुत बाई कर सकते हो, नीचे आएगा तो फिर से आप एवरेज कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर और कुछ एक्चुअली दिख नहीं रहा। नीचे जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा है, 50 पॉइंट से ज्यादा 100 पॉइंट्स निफ्टी के लिए मैक्सिमम 16,080 का लेवल है। हो सकता है 130 का लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, 130 का लेवल भी बहुत स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी के लिए 35,000 बहुत ही अहम लेवल है। नीचे तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, यहाँ कहीं पर 34,900, 800, ये सब स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है अभी। तो वो आप ये कर सकते हो, बेटर यही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम डिप का इंतजार कर रहे हैं, वो मिलेगा तो अच्छी बात है, मिल सकता है, बट गारंटी कुछ भी नहीं है। मेन चीज क्या है ना, यहाँ पर अभी भी इंस्टीट्यूशन का कोई सेलिंग नहीं दिख रहा है, सॉरी बाइंग नहीं दिख रहा है, कोई सेलिंग भी नहीं है। तो बाइंग नहीं दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और यहाँ पर भी वही हालत है, बट यहाँ पर मेजर ये चीज है कि यहाँ पर नेगेटिव में था डेल्टा, वो पॉजिटिव में हो गया है बैंक निफ्टी का। तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर से एक्चुअली वही हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। हो सकता है कि आएगा, मैं तो नीचे आएगा तभी खरीदारी करूंगा, मैं तो ऊपर के लेवल पर खरीदारी नहीं करूंगा। ये सब तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, डिप में एक्चुअली खरीदारी कर सकते हैं। नहीं गैस, तो मैं तो एक्चुअली अभी बंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है हमको। तो मैंने आपको पोजिशनली चार चीजें जो आपको बता दिया है, स्टॉक्स ये एक्चुअली पोजिशनली अच्छी है, तो वो आप देख सकते हो। देखो थोड़ा बहुत नीचे आता है, वहां से फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे खास नहीं दिख रहा है। बेटर ये यहाँ पर एक बार खरीदारी कर लो, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे आएगा तो नीचे, वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिप का उम्मीद मत करो, बहुत ज्यादा डिप नहीं आने वाला है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर आने वाला है। और अगर यूएस मार्केट सब एक्चुअली अच्छा खासा बंद कर देता है और हम 16,250 के ऊपर एक्चुअली टिक जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम एक्चुअली ऊपर जाने की ही तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नीचे नहीं जाने वाला है ये। और अगर बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये भी एक्चुअली रेडी है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो, यहाँ पर अभी 35,500 का एक और हर्डल है इसके लिए, इसके बाद तो ये 36,000, 36,500 तक भी जा सकता है। और ये 36,500 के ऊपर टिक जाता है, इसका ये सारा एवरेजेस के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बुल मार्केट में आ जाएगा, बेर मार्केट को निकल के बुल मार्केट में आ जाएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बुल मार्केट में आ जाता है तो हमारा निफ्टी भी बहुत अच्छा कर सकता है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को पोजिशनली हम देखेंगे ना, बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी का दो गैप अप हुआ था, दो गैप अप में एक गैप अप एक्चुअली फिल हुआ, दूसरा नहीं हुआ। अभी एक्चुअली एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, ये अलग बात है। बैंक निफ्टी का नीचे वाला एक गैप था, अभी एक वाला, दो गैप अभी है बैंक निफ्टी का। डिप में बाई है, सेल कहाँ है?
डिप मिलेगा तो बाई करो, मेरे हिसाब से अभी एक बार बाई करो, डिप मिलेगा तो फिर से बाई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम इंतजार कर रहे हैं डिप का, तो डिप नहीं दिख रहा है कि आ रहा है, कहाँ आ रहा है? वो तो ऊपर ही जा रहा है ना, थोड़ा बहुत नीचे आता है उसके बाद जब और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली डिप तो दिख नहीं रहा है कि आएगा। हो सकता है आ जाए, बट आएगा भी तो बहुत ज्यादा डिप का उम्मीद मत रखो। डिप मैक्सिमम 50 पॉइंट का निफ्टी का, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का, इससे ज्यादा का दिख नहीं रहा है कि आएगा। क्योंकि दोनों में दो दो गैप एक्चुअली बन गए हैं। ये जनरली क्या होता है ना, ये एक मार्केट ट्रेंड अभी अगर बुलिश साइड में जा रहा है तो यहाँ पर और भी गैप अप हो सकते हैं। कल भी गैप अप एक्चुअली हो सकता है, अगर यूएस मार्केट सब एक्चुअली स्ट्रांग हो जाता है तो यहाँ पर फिर से गैप अप खुल सकता है। तो ये चांसेस है, क्योंकि हम तो इंतजार कर ही रहे हैं ना आएगा, तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑप्शन का डेटा देखोगे तो ये पूरा का पूरा शायद शिफ्ट हो गया है। देखो बैंक निफ्टी वाला माइनस लेस देन 1 से 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 133 से ऊपर जा नहीं रहा है, ये 133 पर आ गया है। तो ये तो एक्चुअली हो गया ना, ये इसके हिसाब से तो पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग हो गए। तो वो तो एक्चुअली डिफेंड कर रहे हैं, वो तो कॉल राइटर तो कुछ कर नहीं रहा है। तो हो सकता है कि वो शायद खाली सेल किया था, अभी बाई कर रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो 1,05,000, 1,06,000, तो ये हो गया, अभी एक्चुअली बाई ही करना है, सेल नहीं कर बनती है। सेल का कोई मतलब नहीं है इसका। ये हो सकता है थोड़ा बहुत डिप आएगा, उसका फिक्र मत करो, आप बाई करके बैठ जाओ। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली और कुछ बोलने का मतलब नहीं है। डिप मिल सकता है भाई, डिप मिलने का एक्चुअली कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा, बट एक्चुअली उसका ज्यादा उम्मीद अभी तो नहीं है, पहले तो था अभी नहीं है। ठीक है, ओके, हम वाइंड ऑफ करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये पसंद आया है तो एक्चुअली देखो, जिसको भी ऑर्डर फ्लो करना है, आप लोग एक्चुअली हमारा नीतू को आप बात करो, वो आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, बीएल रुको, आज के लिए रुको, ये पोजिशनल ट्रेड है, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ना, इंट्रा डे के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको एक्चुअली। पोजिशनली ये 255 के ऊपर रहना है। एक मिनट ठहरो, मैं आपको फिर से देखकर बता देता हूँ बीएल का क्या हो रहा है। ओहो, बीएल का कुछ अच्छा खासा सेल हुआ है अभी के लिए। देखो यहाँ पर जो सेल हुआ है ना अभी, ये कौन सा, यही मैं 5 मिनट का है, 1 मिनट। इसके नीचे एक्चुअली इसको यहां से बाइंग आना चाहिए इसको, तो थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन का है, तो यहाँ पर ये जो, ये खाली प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है, 256 के ऊपर सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है। अभी कहाँ पर है, हम वहीं पर है 240 के आसपास। यहाँ कहीं पर इसको सपोर्ट लेना है, इसको एक बार सपोर्ट लेगा उसके बाद एक्चुअली ये फिर से ऊपर जाएगा। तो आप अभी होल्ड करो, अभी कुछ मत करो इसको, थोड़ा वेट करो। मेरे हिसाब से इसको
सस्टेन होना है, इसके ऊपर एक्चुअली जाना है। यहाँ पर जब तक एक्चुअली ये यहाँ पर खाली उन्होंने स्टॉप लॉस हंट ही किया है और कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ पर हम, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। तो जो भी एक्चुअली है, ये थोड़ा बहुत, ये कब का है इनका हाई? हाई कब हुआ था? ओके, ये कब हुआ है? यहाँ पर थोड़ा एक्चुअली प्रेशर दिख रहा है मुझे, इसको होल्ड करना इम्पोर्टेंट। ये अप्रैल का था ना? बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 महीने का ही है ना, इतना खास नहीं है। और हमने गैप अप भी किया है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा। बट ये तो, ये जो अभी लो बनाया है ना, इसके नीचे इसको नहीं रहना है। ये इसके नीचे रहता है तो बेटर है एक बार हट जाओ। ये जो अभी लो बनाया है ना, ये जो अभी लो बनाया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो आप। इसके नीचे नहीं जाना है इसको, यहाँ पर ही इसको सपोर्ट लेना है। क्योंकि इसके नीचे चला जाएगा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा, ये क्योंकि ये हम ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर जो लोग एक्चुअली पहले आके फंस गए थे वो शायद निकल रहे हैं। बट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, देखो। ये जब तक ये नहीं टूटता है 250, ये तो बाइंग का ही है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, हम मोमेंटम ट्रेड ही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमको ये थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये आधा घंटा वेट कर लो। आधा घंटा में ये सस्टेन कर लेता है तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं होने वाला है। अभी नेक्स्ट जो 5 मिनट वाला कैंडल है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ज्यादा एक्चुअली सेलिंग नहीं आती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला कैंडल में कुछ खास सेलिंग आया नहीं है, तो अगर कुछ खास नहीं होती है तो उसके बाद बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर है, तो वहां पर एक्चुअली सेलिंग प्रेशर जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक हम नया हाई नहीं बना पाएंगे। तो अभी के नेक्स्ट हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाफ एन आवर में इसको इसको सस्टेन करना है। 254 के नीचे नहीं जाना है इसको। 254 के नीचे जाता है तो एक बार हट जाओ, लॉस बुक कर लो, यहाँ पर कुछ मत करो अभी। ठीक है, क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, ये तो एक्चुअली स्ट्रांग है, बट फिर भी हमको एक्चुअली ये जाकर फंसना नहीं है। तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश है। देखो यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग ही आया है, उसके हिसाब से तो ये अच्छा ही है। बट ये बार बार सेलिंग आती है तो ये अच्छा नहीं है। और यहाँ पर ये एक डिप तो इस समय पर आना जरूरी था, ये आ गया है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है अगला वाला कैंडल, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो आप, एक्चुअली कुछ फिक्र मत करो उसका। 254 ठीक है। देखो यहाँ पर 254.2 है आपका लो। 254 हाँ, 254 ठीक है। या 253.9 कर दो, 10 पैसे नीचे कर दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसको उससे नीचे नहीं जाना है, इसको यहाँ पर ही होल्ड रहना है। यहाँ नहीं होता है तो एक्चुअली ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट ठहरो, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो रही है कि क्या हो रहा है?
यहाँ पर बाई इतना सारा हुआ, उसके बाद नीचे वाला हट हुआ, यहाँ पर दोनों साइड का स्टॉप लॉस हट हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है। बट एक्चुअली ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको तो सपोर्ट आना चाहिए। ट्रेंड सब कुछ तो अच्छा ही है, तो अभी के लिए तो इसको आना है, बट देखते हैं, क्योंकि दोनों साइड का स्टॉप लॉस कट हो रहा है। तो एक बार ये ऊपर चला जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी स्टॉप लॉस आप लगा के ही चलो। ठीक है, ओके गाइस, चलिए हम निकलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।